your brain is built for laziness. Okay. Now, there's a reason why this entire thing happens, because evolution designed it that way. So, at the beginning, I mean, if you look at Charles Darwin's theory of evolution, the first inhabitants were reptiles. Okay, so the reptiles are your snakes at all, and their response to fear was the fight response. So सांप देखा दस लिया. Then, as evolution moved onwards, the mammalian brain came into being. So, at the core is the reptilian brain, then there is the mammalian brain. The standard response in that case is to um, do a flight situation. तो दर्द लगा भाग गए. तो अब as evolution moved forward, and this is in a very brief nutshell that I'm telling you. So जब तक हम इधर आए up to the Homo sapiens, when evolution reached that stage, we were given a third layer of the brain, which was the neocortex. So what the neocortex does is that it gives you the ability to choose a fight or flight response. So वो क्या कर रहा है कि अब आप you are in a unfamiliar situation. So anything that is familiar is not a threat. Anything which is a change is a threat, and that's how the brain perceives it. अब ब्रेन के को उसने देखा कि जी ये आप चेंज कर रहे हो, एक अनफेमिलियर सराउंडिंग में आ रहे हो, तो immediately there is the neocortex is sending a signal, it's sending out fear hormones to say that hey, there's a threat here. Do you want to flee or do you want to fight? Okay, so that's the third ability that human beings have, which is the ability to choose whether you want to flee or you want to fight. तो अब कमिंग बैक टू माई स्टोरी, अब मेरे को वैलिडेशन तो मिल नहीं रही है ना. अभी आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि मेरे दोस्त यार जो हैं वो तो मुझे वैलिडेशन दे नहीं रहे. अब कहीं पे एक फेयर भी आ रहा है बीच में कि यार, और फेयर देखो, एक तो चेंज है ही है कि अब आप कुछ कर रहे थे ज़िंदगी के अंदर, अब एक नई चीज़ आ गई है. सो देयर इज़ द फियर, द इनहेरेंट फियर ऑफ चेंज इज़ देयर. नाउ बाय दिस टाइम वो डुग्गल साहब वाली वीडियो भी अपलोड हो गई है, तो अब फियर ऑफ रिजेक्शन भी आ गया. फियर ऑफ रिजेक्शन कैसे कि यार अब लोग क्या कहेंगे. हाँ, अच्छा, फियर ऑफ फेलियर, अब आप देख ही रहेंगे, आप की बीवी कह रही है आप दुग्गल साहब बन जाएंगे, आपके दोस्त कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कर लो, आपकी माँ कह रही है पैसे कैसे कमाओगे. तो given all of these things, so there is fear. Okay, there's fear that's building up, and basically the perfect recipe for self-doubt is to put 30 grams of fear of rejection, 20 grams of fear of failure, 40 grams of fear of change, and you have self-doubt.